हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आज हम बात करेंगे ICRA सर्विनेट बायोइन्फॉर्मेटिक्स के यूनिट नंबर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग के बारे में। माई सेल्फ अरविंद कुमार, MSc बायोइन्फॉर्मेटिक्स। चलते हैं ICRA सर्विनेट के फर्स्ट यूनिट फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटिंग के इसके अंदर हमको 28 सब यूनिट पे स्टडी करना है, जो इस लिस्ट में दिया गया है। आप इस लिस्ट को अच्छे से पढ़ के देखिएगा। एक एक करके इस लिस्ट को हम डिफ़ाइन करेंगे और हम ये सारे लिस्ट पे एक प्रॉपर वीडियोज नहीं बना पाएंगे। इसको छोटे छोटे सब वीडियोज में हम रखेंगे। 2 से 3 वीडियोज में हम पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। तो आज हम चलते हैं ICA फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटिंग के बारे में स्टडी करते हैं। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। What is a computer? Computer is a device that transfers data into meaningful information. Data can be anything like marks obtained by your in various subject. You can also by name, age, sex, weight, height, etc. of all the student in the school. कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर एक डिवाइस है जो किसी तरह के डाटा को स्टोर करती है। वो या तो आप किसी भी मीनिंगफुल डाटा को स्टोर, वो स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन हो, या फिर बैंकिंग सेक्टर का इन्फॉर्मेशन हो, या फिर हमारे सुरक्षा विभाग का इन्फॉर्मेशन हो, सारी चीज़ों को स्टोर करती है और कैलकुलेट भी करके हमको दिखाती है। फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर: एक्सेप्ट डाटा, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट डाटा, सेकेंड स्टोर डाटा, थर्ड प्रोसेस डाटा एज ए डिजायर, फोर्थ रिट्रीव द स्टोरेड डाटा, एंड फिफ्थ प्रिंट द रिजल्ट इन डिजायर फॉर्मेट। कैरेक्टर्स इन कंप्यूटर: फर्स्ट ऑफ ऑल हाई स्पीड, सेकेंड एक्यूरेसी, थर्ड रिलीजेंसी, फोर्थ वर्सेटिलिटी, एंड फिफ्थ स्टोरेज। ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर: फर्स्ट ऑफ ऑल इट एक्सेप्ट डाटा और इंस्ट्रक्शन बाय वे ऑफ इनपुट, सेकेंड इट स्टोर डाटा, थर्ड इट कैन प्रोसेस डाटा एज रिक्वायर्ड बाय द यूजर, फोर्थ इट गिव रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट, फिफ्थ इट कंट्रोल ऑल ऑपरेशंस इनसाइड ए कंप्यूटर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये डाटा को लेता है और यूजर के इंस्ट्रक्शन के बेस पे वो लेता है। सेकेंड वो डाटा को स्टोर करता है। थर्ड ये प्रोसेस भी करता है यूजर के रिक्वायर के आधार पे। फोर्थ उसके रिजल्ट को भी देता है आउटपुट के रूप में। और ये सब कंप्यूटर के अंदर में होता है। फिफ्थ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन: there are three sub groups of computer organization. First of all, input device, input unit, output, second output unit, and third जो है वह CPU, control process unit. CPU is made a arithmetic logical unit and control unit depend on memory unit. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 3 यूनिटों पे बना हुआ है: इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड CPU। तो आगे हम इस चीज़ पे बात करेंगे, उसी चीज़ को हम बता रहे थे। ऑपरेशंस: ऑपरेशन मतलब ऑपरेट करना, सिस्टम को ऑपरेट मतलब कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए जो जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है उसके बारे में आज इस स्लाइड में हम लोग स्टडी करेंगे। इनपुट का मतलब कोई भी हम डाटा को कंप्यूटर के अंदर इंटर कराते हैं वो इनपुट डिवाइस हो गया। कंट्रोल यूनिट: द प्रोसेस ऑफ इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग एंड स्टोर इज परफॉर्म अंडर द सुपरविजन ऑफ यूनिट इज कॉल्ड कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट के सुपरविजन में कोई भी प्रोसेस, इनपुट प्रोसेस हो, आउटपुट या फिर प्रोसेसिंग ऑफ स्टोरेज इन परफॉर्म अंडर द सुपरविजन ऑफ कंट्रोल यूनिट। It device when a start receiving data, when to stop it, where to store data. It take care of step by step. कोई भी कंट्रोल यूनिट इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप मतलब किसको आगे रन करना वो सारी प्रोसेस को बताती है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मेमोरी यूनिट। कंप्यूटर यूज टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। किसी भी इंस्ट्रक्शन के पे हम डाटा को स्टोर करते हैं वो मेमोरी यूनिट में जाके स्टोर होता है। अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट ALU: द मेजर ऑपरेशंस परफॉर्म बाय द ALU अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट आर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, लॉजिक एंड कंप्रीहेंशन। Output: it is the process of producing result from the data for getting useful information. CPU made a arithmetic logical unit and
control unit is called CPU. CPU is a brain of computer. Peripheral device, input device, output device, and other peripheral device. Here in this picture, we have looking here. Monitor is the output device, keyboard is the input device, mouse is the input device, and disk drive is the input device. Input device. Keyboards. Standard keyboards start has a QWERTY in first row has 104 key. Mouse, it is used as a pointer. It can perform functions like selecting, menu, command, moving icon, resizing windows, starting program, and choosing operation. It key is point and click action. It's called mouse. Light pen, it is light sensitive detection to select object on the display screen. Fourth, optical magnetic scanner is the OCR, optical character organization device, is automatic data collection. For the example, barcode reader. You have seen at any post office and any banking sectors. टच स्क्रीन आई अभी हम जो मोबाइल यूज कर रहे हैं वो टच स्क्रीन ही तो है. टच पैनल को अगर हम एक फार्मूला भी लगाए तो डिस्प्ले प्लस कीबोर्ड, जिसके अंदर जो डिस्प्ले हो और उसके ऊपर कीबोर्ड हो, डिवाइडेड बाई पैड. एक पैड के अंदर में ये सारी प्रोसेस दी गई हो, वह टच स्क्रीन कहलाती है. 6. माइक्रोफोन फॉर द वॉइस एज ए इनपुट. It take voice as an input. There are two types of microphone: desktop microphone and handheld microphone. 7. Trackball. It is like a mouse, but it is pointing device. Output device. Monitor, visual display unit. It is display performed with a video adapter card on the monitor. It is two types: CRT, cathode ray ट्यूब, एंड LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले. CRT बहुत पुराना हो गया. जब टीवी बड़े बड़े होते थे, बॉक्स वाले जो पुराने ज़माने में हुआ करते थे, 2005 तक वो चल रहा था. उससे पहले LCD अभी आई है जो दीवार वगैरह पे चिपका दी जाती है. प्रिंटर, इट कैन बी सेंट ए हार्ड कॉपी. दे आर द 4 टाइप्स ऑफ प्रिंटर: लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, डॉट प्रिंटर, एंड लाइन प्रिंटर. Plot, it is like a printer, but it is print large size of information such as construction plan for building or blueprinting of mechanical object. A speaker, it is listen to voice like music and conversation with people. नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सॉफ्टवेयर्स के बारे में. अकॉर्डिंग टू सिलेबस, a set of instructions are called program, and a set of program can be called system software. Instruction, many type. A set of instruction is called program, and a set of program is called software. In this picture we have looking software. There are two types of software: system software and application software. System software have a operating system, and application software is the two types: generalized package and customized package. Next I will discuss operating system, OS. It is a system software that provide an interface for a user to communicate with the computer, manage hardware device, disk drive, keyboard, monitor, etc. Manage and maintain disk file system and support application program. For example, UNIX, Windows, and Linux. There are many types of operating system are available in this time. Bio modules as a application software. It is a set of programs which are written by perform a specific task. It is classified into two types: generalized package and customized package. Application software is used in mobile software and any types of softwares.
Generalized package. It use friendly softwares. It is use easy to use. Example: preparing document, drawing pictures, data to manage data information, preparing presentation, play game, etc. For example, WordPress software for the preparing document, Microsoft and on MX Excel and this presentation, graphics, MX PowerPoint, database, SQL Server and Oracle, graphics tool, Paint, Shop Pro, above Photoshop is the freely available in the site, freely available. Customized package, especially requirement of an organization, institute, for example, student information detail, pre-roll package, inventory control, etc. Customized package. Then I will discuss computer language. Language are a means of communication. Every computer language is bound by rules known as syntax. Language in computer, there are two types of language in computer: low level language and high level language. Low level language are divided into two types: machine language and symbolic language. High level language is divided into five subtypes: basic, COBOL, Fortran, C and C++. Basic, beginner. I will first of all I will discuss basic. Basic as stands for beginner all purpose symbolic instructions code. It is widely used as to learn general purpose language, mainly used in microcomputer in earlier day. COBOL, common business oriented language. It standardized language used for commercial application. Fortran, formula translation, developed for solving mathematical and scientific problems, one of the most popular language among scientific community. See, structures, programming language used for all purpose such as scientific application, commercial application, development game, etc. C++, popular object oriented programming language used for general purpose. Next, I will discuss batch processing. It is a technique in which an operating system collects the program and data together in batch before processing unit. In this picture, we are showing here job 1 is a start, batch 1 is given CPU, job 2 is a start operating system given the batch 2 is CPU, and in this time multiple batch are given a operating system and operating system given a batch to CPU. Advantage of a batch processing system: batch processing take much of the work of the operating system in the computer. Increase performance as a new job get a start as soon as the previous job is finished without any manual intervention. Disadvantage: difficult to debug program. A job could enter an infinite loop. Due to lack of protection scheme, one batch job can affect pending job. मतलब एक जॉब अगर क्रैश किया तो सारे जॉब को रोक देगा. ये हमारे लिए डिसएडवांटेज है. पर हमारा बेनिफिट क्या है कि हम मल्टीपल जॉब को एक बार दे देते हैं तो स्टेप बाय स्टेप सारे जॉब को हमारा सिस्टम रन करा के हमको रिजल्ट आउटपुट देता है. हमको इंस्ट्रक्शन फिर दोबारा नहीं देना पड़ता है. मल्टीपल प्रोग्रामिंग बैच प्रोसेसिंग. It is also called multi-programming task system. A series of jobs are executed without any human intervention in batch processing system. Batch processing system में क्या है कि जो भी जॉब होता है वो ह्यूमन के थ्रू नहीं होता, वो खुद ब खुद करता है. हम इसको इंस्ट्रक्शन देते हैं एज ए फर्स्ट ऑफ ऑल. इन दिस सेट ऑफ जॉब with similar need are batched together and inputted to the computer for execute. Multiple program to execute on a single processor system.
Example, transactions of credit card, generate of a bill, processing of input and output in the operating system. Time sharing system. This is the most important in this tutorial. It is allow many users to share the computer resource simultaneously. It is share of a computer resource among many users at the same time by means of multi-programming and multitasking. As for example, I will there are three peoples are using a operating system. One peoples use a word file, second email, and third web browsing, and effect on the CPU. So multiple in this time given a time sharing. Distributed function system. A distributed system allows resource sharing, including software by resource connecting to the network. Example: internet, www, email, etc. www, World Wide Web. There are many types of distributed system: client server system, peer-to-peer systems, middleware system, three-tiered system, n-tier system. In this picture, we have a communication network as given here. CPU and memory allocated the distributed system in communication. Real-time system. Any information process system with hardware and software communicate components that perform real-time application functions and can response to event within predictable and specific time construction. Example: air traffic control system, network multimedia system, command control system, etc. There are two types of real-time system: reaction and embedded. Reactions as a real-time system make aircraft and railway, embedded automobiles and subway. They are the in this picture we are looking here real-time operating system. Okay. Deadlock. Next, a deadlock is a situation in which two computer programs sharing the same resource are effectively prevention each other from accessing the resource, resulting in both program caching in function. A deadlock occurs when the first process lack the first resource at the same name times as the second process lock the second resource. The deadlock can be resolved by cancelling and restarting the first process. In this picture, we have showing here resource 1 is given assigned to process 1. Resource 1 assigned to process 1 waiting for resource 2. Then process 1 is getting process resource 2 assigned to process 2, then waiting for resource 1. मतलब रिसोर्स 1 अगर असाइन कर रहा है प्रोसेस 1 को, तो रिसोर्स 2 वेट करेगा जब तक कि प्रोसेस 1 अपना काम ना कर ले. उसी तरह से रिसोर्स 2 जब असाइन करेगा प्रोसेस 2 को, तो रिसोर्स 1 वेट करेगा जब तक कि रिसोर्स 2 अपना काम ना कर ले. यह अगर इसके बीच में अगर क्रैश होता है तो वह डेडलॉक का सिचुएशन आ जाता है, मतलब सिस्टम डेडलॉक हो जाता है. CPU scheduling. It is process to determining which process will own CPU for execution while another process is one held. There are three types of CPU scheduling: waiting time, quantum time, and nice value. CPU scheduling. Computer run 100 nanosecond per program at a time, but each CPU can
only run one at a time. There are multiple CPUs time scheduling given here. Computer security. Two protections of computer system, server and virus information from harm, chief and unauthorized use. Device the help us with network security, as for example firewall. Firewall is the computer security. बहुत सारे लोग अपने सिस्टम में फायरवॉल इंस्टॉल करते जाते हैं, जैसे कि वेब सर्वर हुआ वगैरह वगैरह. हम अगले ट्यूटोरियल में फायरवॉल के बारे में अच्छे से बताएंगे. इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम इसके बारे में भी अच्छे से बताएंगे. वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के बारे में बताएंगे. हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग अगले सेशन में इसको दिया गया है. Computer graphics. Computer graphics is a sub-field of computer field science which study method for digitally synthesize and manipulating visual content. Although the terms often refer to the study of three dimensions computer graphics, it also compose two-dimensional graphics and image processing. Computer graphics 2D 3D visualization technique. Computer graphics has provide a powerful mechanism for creating meaningful and interactive with those representation. Example for escalator plot, line plot, pie plot, bar plot, heat map plot, area plot, map and histogram plot. They are the various visualization technique and given the plot. There are many types of visualization in computer. Scientific visualization, data visualization, information visualization. फोर्थ में एजुकेशनल विजुअलाइजेशन, फिफ्थ में नॉलेज विजुअलाइजेशन, सिक्स में प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन, सेवन्थ में विजुअल कम्युनिकेशन विजुअलाइजेशन टेक्निक. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ विजुअलाइजेशन टेक्निक. लाइन जनरेशन एल्गोरिथम. टू ड्रॉ ए लाइन you need two points between which you can draw a line. There are two types of line generated algorithm. DDA algorithm, digital differentiation analyzer. Branson's line algorithm. Third, midpoint algorithm. Example for this. And second is circle generation, and they are given a pictures. There are many visualization technique to algorithm used in many types of visualization technique. Visualization in three dimensions. Parallel projections are divided into two groups: orthographics and oblique. Orthographics are divided into four subgroups: top, front, side and axiomatic, and oblique is divided into two subgroups. Here, rational algorithm. The process of converting geometrical, virtual, trigonal, polygonal, 3D models of object primitive into their discrete approximations. Raster scan. It is a electron beam is swept across the screen one row at the time from top to bottom. इस पिक्चर में आप लोग देख रहे होंगे, यह जब हमारे पास CRT टाइप का जब वीडियो मॉनिटर हुआ करता था या टीवी हुआ करता था, तो उसमें जिग जैग लाइक स्ट्रक्चर होता, जैसे स्कैन लाइन होता था, वर्टिकल रिट्रेकल लाइन होता, हॉरिजेंटल लाइन होता था. वो हमारा रोस्टर एल्गोरिथम पे बना था. देन रैंडम स्कैनर जब आया तो हमारा LED आया. It is the electron beam is directed only to the part of the screen where the picture is to be drawn rather than scanning from left to right and top to down
as a raster scan. It is also called vector display, stroke writing display, and calligraphic display. In this time, LED are present in random scan. Applications of computer graphics. First of all, computer graphics use interface. Second, business presentation graphs. Satellite image. 6 में मेडिकल इमेज, 7th में इंटरटेनमेंट, 8 में इंजीनियरिंग ड्राइंग, 9 में ट्रेनिंग, 10th में आर्किटेक्चर, 11 इंटरटेनमेंट, 12 में सिमुलेशन एंड मॉडलिंग. यूज इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स एज ए ड्रग डिजाइनिंग, मॉडलिंग, डॉकिंग एंड एड्स ऑन. Rendering and image synthesis. It is the process of rendering or image synthesis. They are the same terms. It is the process of generating a photorealistic or non-photorealistic image from a 2D or 3D model by means of computer program. It is process of animation. Animation, it means give life to any object in computer ग्राफिक्स. मतलब एनिमेशन का मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को हम कंप्यूटर ग्राफिक्स के थ्रू स्वैप करें. टाइप्स ऑफ एनिमेशन टेक्निक. ट्रेडिशनल एनिमेशन टेक्निक, एग्जांपल फ्रेम बाय फ्रेम. परफॉर्मेंस बेस्ड, एग्जांपल फॉर मोशन कैप्चर. फिजिकल बेस्ड, डायनोमिक्स. इन दिस टाइम फिजिकल बेस्ड एनिमेशन टेक्निक आर वेरी पावरफुल and very demandable. Image processing with emphasis on biological system. It is a subfield of bioinformatics and computer biology. In this picture, we have look at here network, computer, image display and मास स्टोर. कंप्यूटर में क्या होता है, हम डिस्प्ले देखते हैं और स्टोरेज की कैपेसिटी होती है. उसके अंदर हार्ड कॉपी डिवाइस होता है एंड इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं. इमेज प्रोसेसिंग हार्डवेयर्स इमेज सेंसर्स को सेंस करता है, प्रॉब्लम डोमेन को समझाता है. कम्युनिकेशन ऑफ द डिफरेंस एलिमेंट इन्वॉल्व इन द डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग. देयर हैज बीन इंक्रीज फोकस ऑन डेवलपिंग novel image processing, computer version, data mining, database and visualization technique to extract, compare, search and manage the biological knowledge on the data interventions problems. Computer networking. नेक्स्ट वीडियो हम लोग अगला बनाएंगे. थैंक यू.